session dives us into how these modern forces can be used with intention and impact. As startup rise, digital competition grows. Knowing how to leverage technology becomes essential. This conversation offers practical insights into strategy, innovation, and building a business in the digital first era. Good evening, I Bhavika Bajaj welcome you all to the 7th edition of Orange City Literature Festival proudly organized by Rise Honing Foundation. A warm welcome to our dynamic speaker of the evening, Ms. Simran Dhameja. Simran Dhameja ma'am is an Indian entrepreneur and public speaker who stepped into the startup world at just 19 years of age. With over 8 years of experience in IT, e-commerce and business development, she has built, scaled and managed multiple ventures, turning ideas into large successful businesses. She is the former and CEO of Shark N, an IT and business development company that helps startups in e-commerce brands and creators grow through technology, automation and smart strategy. As a speaker, Simran ma'am has delivered 100 plus sessions across India, including talks for Google and the Entrepreneurship Development Institute of India. She has inspired thousands of students, entrepreneurs, and business owners on topics like startup growth, AI for business, scaling e-commerce, and personal branding. Her mission is to empower India's youth to build scalable, tech-driven, and become leaders for tomorrow through real-world learning. Next 40 minutes will explore how digital tools, platforms, and AI can transform ideas into scalable business and strong personal brand. The stage is yours, ma'am. Thank you, ma'am, for OCLF puts through things about you is like मैंने भी अपने आप को ऐसे कभी नहीं देखा. मैं इतना सारा भाव ऐसे हो जाता है. So firstly, thank you for showing up. Thank you so much. Do one thing for me, clap for yourself for showing up. You're ready for learning. Right? Secondly, let me begin with saying this one thing. If you are here today to take away and learn something, I really want you कि यहाँ से जब भी घर जाओ ना, तो एक बार जाके सोचना कि वो सेशन में हमने कुछ लेके आए क्या. Like be true to yourself and answer yourself if you took something from any session that you went through at OCLF. Because I'll tell you a story and this story will blow your mind. Let me start with it. So I was 18 years old. है ना? I was doing C. Sir knows the story. A lot of people here might know the story by now who are like showing up once again for another year. This is my 6th year at OCLF. ठीक है? I was never a speaker here. दादा अच्छी दिख रही हो क्या मैं? बार ठीक? Okay, चलो let's go. So 6 years back at 18, I dropped out C. I'm not motivating you to drop out anything, but I'm motivating you to learn by yourself because the generation we are in, एक किताब पढ़ने से कुछ नहीं होगा. किताब पढ़ना जरूरी है. Simply to mean दाल चावल खाना जरूरी है. But दाल चावल से सारा प्रोटीन इनटेक कंप्लीट हो जाएगा क्या? नहीं. Exactly like that. One book cannot fulfill your 100% need of education that is required in 2025, 6 and furthermore years. So back to my story. Because story का main character कौन है? अरे मेरी story का मैं हूँ ना, तुम्हारी story का तो तुम हो ना. Okay, now tell me, like raise your hand, everybody raise your hand, turn your hand, give yourself a bravo for being the main character of your life. Yes. So I was main character कौन है इधर? मैं. Everybody say मैं. Who is the main character? मैं. Good. So now I started with doing C. Didn't like it, dropped it. Dropped it when I knew I could do something better that was going with my brain or delulu में रहता है ना. I live in delusion. अभी भी मैं delusion में रहती हूँ. हो जाएगा यार, ऐसे कर लूँगी मैं तो, वैसे कर लूँगी मैं तो, मैं तो ये कर लूँगी मैं तो, अरे वाओ क्या लाइफ हो जाएगी. And I'm sitting at my table thinking कि अरे ये तो मैंने आज कहीं काम नहीं किया है. I'm thinking what I would achieve 6 years later. What my client is sitting next to my table 6 minutes later and need to get a presentation, bro.
That delusion in my life. I'm still at that delusion. क्लास चल रहा है, सर पढ़ा रहे हैं कॉस्टिक. हमारे एक सर होते थे, वेरी क्यूट सर. ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा सर इज टीचिंग है. I'm like, मैं स्टार्टअप बनाऊंगी. मैं क्या स्टार्टअप में बेचूंगी क्या? सोचेंगे ना, स्टार्टअप बनाना इंपॉर्टेंट है. स्टार्टअप में बेच के तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है. बनाना क्या इंपॉर्टेंट है? खाना. खाने में टेस्ट होना. खाने में क्या बन रहा है इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं. मैं किचन में गई, मैंने खाना बनाया. मैं कुछ भी बनाऊं. Wrong way of doing the startup? Wrong way of doing the startup? That's what you do when you don't have data. When you don't know what to do. You just want to do. You just want to start the content creation. I want to post a picture on the social media. I want to look pretty. What would that give me? Why am I doing that? Do we have answers to this? We'll get answers to this today in next 40 minutes. This time I'll speed up. Last time पता है क्या हुआ था? मेरा पूरा सेशन आधा हुआ, आधा खत्म हो गया, लेकिन हम मस्ती ही बहुत करते रह गए. इस बार मैं सीरियस सेशन करूंगी, मैं कोशिश पूरी करूंगी. ठीक है. So I started with 18. ड्रॉप आउट कर लिया, स्टार्टअप चालू कर लिया. स्टार्टअप में पता नहीं क्या किया, अगेन कुछ भी मैं बता रहा ना, कुछ भी किया मैंने. एंड आफ्टर 6 months of that I failed with that startup, started again, failed with that startup, started again. Abhi, when I turned 19 I started my second startup because the first one didn't work, right? Second startup was a clothing brand. Uska first outlet as an exhibition stall was put up at OCL. I was an exhibitor in the first time हुआ था. First time exhibition stalls were allotted at OCL when I was 19, and that was the stall. I was there downstairs. I was like, yeah, some speaker should come and see my stall. You get me? I was that kid there. And then 2020 happened. Another startup blew up. 2021, I was speaker here. At 2020 also, I was a speaker here. But then I did as a chota sa panel, chotu sa. And then at 2021, 22, all those years I was speaker here. And today I'm here showing up. Repeated people, I see so many faces who've come like once again for the third year, second year here. So, little story of somebody who started a startup, was given an opportunity by this platform. Like, if you see Simran growing somewhere in life, you should know there's a big chunk of OCLF playing a role. So, you see that one, at first time मैं workshop attend करने आई थी ना, at starting. उसके बाद ही तो that thing happened. So what you take away from any place, not just OCLF, कहीं भी जाओ, वहाँ से कुछ डेटा मिले, कुछ सीखने मिले ना, सोच के ये देखना उसी दिन कि can I make something out of it? Because 1 year I got the data, and that year I was like कुछ तो करेंगे अगले साल, and next year when I got the opportunity, I was like नहीं, this we should do. Even I'll tell you, that was a bootstrap stall. I was interning, and with that money I put that bootstrap stall, and it's very overwhelming for me to see people coming here and listening to me, somebody who started over here. So my startup has grown from listening to a speaker to making that work here only, to again becoming this person speaking here, getting an opportunity to speak here. I think in itself, this whole graph makes me see like, oh my God, we've come somewhere. So whenever you take away something from somewhere, no, don't think a lot before making it work. Simple that. इतना ही बोलना था. अभी हम motivation को थोड़ा. Let's start with the topic today. The topic today is technology, AI, and social platforms. How to use these 3 things to make a personal brand, make a business, and start a startup. Right? First things first. हम लोगों को ChatGPT के बारे में पता है. कितने लोगों को पता है? Raise your hand. Raise पूरा hand ऐसे बिल्कुल ऐसे. Very good. Now how many of you don't know about ChatGPT? No clue. ज़्यादा तो यूज़ नहीं करते. नाम पता होगा but यूज़ नहीं किया है कभी. Raise your hand. बिल्कुल यूज़ नहीं किया. आज हम सब यूज़ करेंगे. Everybody open your phone. जल्दी we have very less time. Open your phone. Open your Google. Search ChatGPT. Everybody. Today I'll just make you learn things ऐसे. Only if you wish to. Everybody open your phone, open your Google, open your ChatGPT. You did? सबका ChatGPT खुल गया? किसी को कोई issue है? Anybody wants me to come and help also? Everybody ChatGPT opened? Now write with me. Write to your ChatGPT. Hi, my name is. Write your name. Done.
I love to, whatever hobby you like. I want to call you, everybody call your ChatGPT bro. Now write, I want to call you bro. And you call me cute. Done? सबने यहाँ तक लिख लिया? Help me develop a personal brand on social media based on my hobby and write me a 30 days, help me build a personal brand and write me a 30 days content plan in table format and become my personal brand strategist. Are we all done? किसी को भी दिक्कत आई है इसमें? Anybody needs any help? Done, done, done. Everybody? Anybody needs help? Content plan in Content. Build me a content plan for 30 days in table format and become my brand strategist. Done? Personal brand strategist. Everybody send. Loading. ChatGPT is doing something. कुछ तो कर रही है वो. ChatGPT is just making some masala for everybody's personal brand now. Oh my god. Now ChatGPT ने पूरा सा टेबल बना दिया होगा 30 दिन का कंटेंट प्लान. Ma'am, sorry. Yes. Can you repeat once again? अभी तो मुझे भी याद नहीं है. Anybody? कोई मेरे को अपना फोन नहीं है जिन्होंने लिखा हुआ होगा. Yeah. Hi, my name is Simran Thameja. I love to whatever you love to. I want to call you bro and you call me cutie. Help me develop a personal brand on social media based on my hobby and write me a 30 days content plan in table format and become my personal brand strategist. अभी मेरे डेटाबेस में यार एक ही बार आता है, अगली बार तो मुझे भी याद नहीं रहता कि मैंने इसी फॉर्मेट में बोला था. इस सिंगल साइकिल एक बार बस ऐसे बोल दिया तो बोल दिया, अगली बार तो मुझे भी याद नहीं रहेगा कि मैंने क्या बोला. Very bad skill as an entrepreneur, but ultimately 99.99% of entrepreneurs go through this thing where you will not remember what you were saying 15 seconds back. You will not remember because everybody who has a name and has a anybody who is known by one or more people, anybody who has a name and is known by one or more people is a personal brand. Now, there can be sizes of personal brand. Somebody can be this size, somebody can be this, somebody can be this, according to the number of people that know you. Followers is not your personal brand. मैं बेहोश हो जाऊंगी इधर अगर मेरे को अभी कोई फिर से आके बोलेगा followers is personal brand. It's not. It is freaking not. Let me flex something. I have 26,000, 27,000 something followers on the internet. And they're pointless. अब ये वीडियो जाएगा मैं followers मेरे को ट्रॉमा दे देंगे. But कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. इंटरनेट पे जितने followers आपके हैं वो मैटर नहीं करता है. I'll tell you how. उस पूरे followers में से मेरा कोई client नहीं है. My whole client is from pan India. They don't even follow me. They don't even connect to me on internet. LinkedIn पे भी वो लोग मेरे साथ connected नहीं हैं. Mumbai, Bangalore, Ahmedabad, all of my clientele and सबसे बड़ी बात बताऊँ 100 session. Today is my 102nd session. wow. And but this 102nd session, do you all follow me on Instagram? When you will go home, then you will do. But still, you will not see me on the internet as much. You will remember me what I said here today. True. True? Yes. True? When I say true, we do this. We do this? Okay. Now, if you are existing in this planet, you have a name,
2 or more people know you. Obviously, मम्मी पापा भाई बहन चाचा वाला ऐसे ही करके 50 लोग आपको जानते हैं. It's personal brand. Now, the point is how you grow your personal brand, how you make it big, how you make it bigger, how you make it biggest. Raj Chamani, everybody we know, right? How we know Raj? Now Raj was always a personal brand. He was always a person. Always people knew him. He had something to sell. Now, personal brand is name and people knowing you. Personal brand का quality is you have something to sell. Now all of you wrote one hobby. हम सबके पास देखो, अगर मेरे चाचा जी हो, मेरे मामा जी हो, शादी हो घर पे, सबके पास कुछ ना कुछ बताने को रहेगा. मुझे आज come back to my story because trial and error तो मैं example हूँ उस चीज़ का. First I tried my first startup where I was trading clothes. Second we started designing, which was सरल, मेरी मम्मी के नाम पे that brand started, and we designed clothes and that went on. We did clothing. COVID started. कोविड में फुल पावर कपड़े हैं मेरे पास. मैं नागपुर में अकेले रह रही हूँ, मेरे घर वाले यहाँ रहते ही नहीं थे. My family comes from Varsa. I am from Varsa. I used to live here alone, and then I have so much stock, and then our office also went by because now COVID खाली करो दादा. Right? We left the office. We went home. But now, do we have an option to quit? We never do. No matter what, we don't have an option. May it be. अभी वापस back to motivation. May it be business, may it be yourself, may it be your mental health, may it be you yourself, your business, your family, your relationships. We don't have an option to give up. We always make it work. And everybody who make it work now is a personal brand. Yes. True? True. 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 क्या बढ़िया बातें कर रहे हो. ठीक है चलो. Back to the topic. We went home. अभी घर से तो कुछ तो करना पड़ेगा ना. It was 2020. तभी स्मॉल बिजनेस तो इल्ले, एंड आई वाज डूइंग स्मॉल बिजनेस सिंस 2019. यस. सो स्मॉल बिजनेस के नाम पे जो मैं ये बिजनेस कर रही थी, जो CLF एंड एवरीथिंग, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू. वी वेंट होम. कितना टाइम है भाई, रुक जा, पता चला पूरा नहीं. वी हैव 20 more minutes. ठीक है. नाउ द मोमेंट वी स्टार्ट विद दैट ब्रांड डिडंट वर्क. वी वेंट टू, अभी घर पे कोई तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा. वी स्टार्ट विद इंस्टाग्राम. नाउ वी गॉट टू अ प्लेटफॉर्म. She told her 15 मिनट आ गया, जल्दी करो ना. ठीक है. So now we got a platform. That platform पे we started selling, which was Instagram, and then we decoded something called website. बोले अरे यार ये वेबसाइट बेचेंगे तो बढ़िया हो जाएगा. अब तो और ज़्यादा आ रहे हैं आपको. ऑलरेडी doing good marketing. We already had number of people. अब क्या हो रहा था, हम सब मैन्युअली कर रहे थे वेबसाइट इस पे Instagram पे. ऑर्डर आता था, करते थे, भेजते थे. You get me? If you have a small business or any business, हम क्या करते थे, भेजते थे. अब तो ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे थे. I was creating content on social media. I was creating comedy content, and then someday I would wear a dress from my business, and I would create a comedy content, and then that video used to be viral, and then the caption, oh my, यहाँ से outfit है, ठीक है, go order, and then orders used to come manually. हम एक-एक का नंबर लिखते थे, एक-एक से manually पेमेंट कलेक्ट करते थे. बहुत इतना, मतलब we were doing 50-60 parcels, but then manual process was a lot. Then we got some idea, website. अब हमने वेबसाइट बनाई, लेकिन अब वेबसाइट प्रोडक्ट लिस्ट नहीं हो रहे, इट इज सर्विस बेस्ड वेबसाइट. फिर समझ आया देयर आर 2 थिंग्स ऑन द इंटरनेट. वन इज अ वेबसाइट, अदर इज एन ई-कॉमर्स स्टोर. अब ई-कॉमर्स को पूरा अभी मेरे पास 40 मिनट ही है. सो इफ एनीबॉडी वांट्स टू ई-कॉमर्स, वी आर डूइंग टुमारो. ई-कॉमर्स वाला अभी मैं थोड़ा हटा दे रही हूं बिकॉज़ फॉर पास्ट 5 years वी हैव डन ई-कॉमर्स अ लॉट इन द OCLF itself. So this year I wanted to start from zero, बिल्कुल शून्य से. So we did an e-commerce website. Now we listed products. ठीक है. अब धीरे धीरे करके इन द 6 months, लेट मी कट शॉर्ट इट, वी लर्न हाउ टू मेक एन ई-कॉमर्स स्टोर, हाउ टू इंटीग्रेट आवर ई-कॉमर्स स्टोर टू शिपरॉकेट, हाउ टू इंटीग्रेट आवर ई-कॉमर्स टू वेबसाइट्स, मेटा एड्स, हाउ टू प्रमोट इट, हाउ टू डू SEO, हाउ टू डू मार्केटिंग. वी लर्न 10 million थिंग्स. अब हम वेबसाइट बनाने से लेके कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने से लेके टेली कॉलिंग से लेके सब अनाउंस कर रहे हैं एक ब्रांड के लिए, विच इज सरल. Then my point when I was saturated with that business, like clothing is बस है भाई. I can't deal with women telling me कि मैडम ने मुझे साइज नहीं आया. I can't deal with women telling me कि ये आपका डिलीवरी बॉय मुझे 50 रुपए कम नहीं करके दे रहा है. Negotiating with the delivery boy. I was done. That's when we turned to this कि ये problems जो हमको आई है बिजनेस बनाने में पिछले 1.5 साल में, सबको आई होगी. सब मैन्युअली कर सकते हैं. That's what an entrepreneur does. Solves a problem. So we solved a problem. The problem for MSMEs, tech businesses, and a lot of people who were having problems, जहाँ पे उनका budget छोटा था, but then they wanted a solution. We made 2 types of solutions.
standard solutions and customized solutions for technology. What we did, we made them integrated solutions, we made them ऐसे छोटे-छोटे softwares, apps, websites, जहाँ पे उनका business आसान बन सके. हमने उनको PDF से and we used to not do this कि बस हमने बना के दे दिया. हमने website बनाया ना, तो we used to train the clients. We used to अभी मैं क्यों educate कर पा रही हूँ? Because I have trained single client for 366 hours. Where I used to sit with the client, tell the client कि जैसे जो e-commerce website हिंदी में शुद्ध कि ऐसे ऐसे आप इस फोटो को अपलोड करिए, इतना डेटा लिखिए, आपका लिस्टिंग हो गया. We developed an app. That app is in-house हमारा ही app है. That app we developed and it's 2 years back का 2022 का situation. We developed that app and now with that app and that जो भी हम systems बनाते थे, उस system के through जो काम करने में इनको 6 दिन 15 दिन लगते, ये 6 घंटे में कर लेते हैं. To list a product, it used to take them a lot of time because optimized process है. But now when we have given them a standard format, या फिर एक process दे दिया, process को देख के वो करते थे और 4 बार करने के बाद at the 5th time they become a professional. अब 4 बार अगर हम सब्जी बनाएंगे, 5वें बार तो बिना रेसिपी देखे बना लेंगे ना. Get me? So what we provided them? System. Basically एक system, एक process दे दिया हमने, या तो हमने उनको एक operation system बना के दे दिया, इसको यूज करके कर लो, या तो हमने एक पूरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के दे दिया कि इसको यूज करके कर लो. That's when we came up with Shark Entertainment, the IT and business development company. We stand in top 30 companies in India today. We solved the problem, right? We solved the problem using technology. Now let's come to technology, and now I'll tell you a story before I start with technology. I created content, comedy content I created on Instagram. I created 2 types of content actually, on 2 profiles. One, Simran Ameja, where I created comedy content. Another profile I created business content. Every session we used to go to, every reel we used to shoot, content we used to film, we posted that. Right? And Bhavish, 1 minute वाला reel बना ना? 1 minute. Very good. Okay, so now, there was a standard format also. In this also there was a standard format of how a speaker is supposed to be. When somebody is standing on the stage, like if I see somebody standing here, that person is supposed to be serious, supposed to give data, supposed to talk very technically. But what if I am getting bored? What if I am not interested? What if I am not? Because I have always been a fun person. Even if I sit in a meeting, there is a heated argument. 5 minutes later, like, ठीक है ना चलना चाय पिला यार मेरे को. So that's how your team, the people you work with, gets along. भाभी मेरे से बोर होता है क्या? सबूत. ठीक है? So now, when I'm sitting on that table, when I'm breaking that chain of how a speaker is supposed to be, I can also change the format my business works because it is my business. I can use as much technology as I want to. Right? मैं पर्सनल ब्रांड बनाऊंगी, अब मैं अपने AI से स्क्रिप्ट लिखवाऊंगी मेरी मर्जी. फिर जब मैं वीडियो शूट करूंगी, मैं उसमें अपने हिसाब से कुछ भी बोल दूंगी, मैं अपनी पर्सनैलिटी डाल दूंगी उसमें. किसका पर्सनल ब्रांड है? मेरा. Now, we know what is the personal brand. We know there is a chamber called technology. We know there is a chamber called audience. ठीक है? यहाँ पे सिमरन खड़ी है, यहाँ टेक्नोलॉजी है. ठीक है? Let's consider this camera stand as technology. This is me. That side is audience. ठीक है? अब ऑडियंस के हिसाब से एक कंडीशनड दिमाग में स्टेटमेंट बना होता है कि ये चीज तो ऐसी होनी चाहिए. ठीक है? अभी एक बात बताओ, टूथपेस्ट कौन से कलर का होता है? चलो सब एक साथ जोर से बोले, टूथपेस्ट कौन से कलर का होता है? ज्यादा आवाज व्हाइट का आया क्योंकि कंडीशन है. ये तो अभी अतरंगी कलर आ गए हैं. आप अपने पप्पा से पूछो, पप्पा बोलेंगे टूथपेस्ट तो सफेद होता है. मेरे पापा सिंपल बोलते हैं टूथपेस्ट सफेद है तो ठीक है, दूसरा कलर तो धोखा है. कंडीशनड ब्रेन, राइट? सो व्हेन योर ब्रेन इज कंडीशनड टू टेल यू समथिंग कि भाई ये तो ऐसे ही होता है, उसको तोड़ने के लिए बहुत मेहनत लगती है. ठीक है? सो व्हेन यू आर बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड, द फर्स्ट थिंग टू डिलीट आउट ऑफ योर माइंड इज ये तो ऐसे ही होता है. And the first thing to put in your mind is, मैं इस साइड खड़ी हूँ, इधर टेक्नोलॉजी खड़ी है, we both can decide कि कैसे होता है. Speaking right? So now I can decide what me and technology can plan and execute and put out there. Done? So now we understood what is a personal brand. Now we understood how we can decide with the technology to use my personal brand and my business.
Now the third chamber, if it's my startup, as an entrepreneur or a founder, I have 3 jobs. 1, to find something that sells. Now everybody, I want you to write this somewhere. जल्दी only 5 minutes. मैं 7 मिनट ले सकती हूँ क्या? Done? चलो 2 मिनट ज़्यादा. Very fast. 8 minutes? 10 minutes. 10 minutes ले सकती हूँ, मैम ने बोल दिया है. ठीक है, चलो. So now, when we start a startup, we start a business, we start anything, even a personal brand. How we question ourselves is क्यों, क्या, कैसे, कहाँ. क्यों, क्या, कैसे, कहाँ. लिख दिया? ठीक है. अभी क्यों is whatever I am offering, लोग मुझसे क्यों खरीदेंगे. क्या, मैं ऑफर क्या कर रहा हूँ. कैसे, मैं किस फॉर्मेट में ऑफर कर रहा हूँ. और कहाँ, मैं किस एरिया या किस टारगेट ऑडियंस या किस पर्टिकुलर जोन को ऑफर कर रहा हूँ. क्यों, क्या, कैसे, कहाँ. दिस 4 थिंग्स, 4 केस सम अप कि आपका पूरा का पूरा जो बिजनेस मॉडल है वो कैसे वर्क करेगा. क्योंकि ये 4 में आपका मार्केट रिसर्च, डेटा रिसर्च, ऑडियंस रिसर्च सब हो जाता है. नाउ यू रियलाइज. ठीक है, अब मैं थोड़ा टेक्निकल कर रही हूँ. अभी नींद आए. You were sleepy. I'm not sleepy. I have a silent. I'm kidding. It's okay भाई. It's okay भाई. इतना टेंशन ला रही हूँ. भाई मेरे को बहुत नींद आ रही है. मुझे एक बात बताना. हाँ जी. जैसे आपने प्रोडक्ट लिया, आपको क्लोथिंग का, दैट वाज अ प्रोडक्ट एंड वाज हाँ. गोइंग टू क्रिएट द ई-कॉमर्स हियर. हाँ. हाउ अबाउट द स्किल, जहाँ स्किल शोकेस करना है या अपना हाँ. ब्रांडिंग शोकेस कर तो स्किल कैसे शोकेस करें. Coming there. So the skill of पर्सनल ब्रांड. अभी लेट मी जस्ट सम अप दिस वन एंड आई विल शिफ्ट टू दैट. क्यों, क्या, कैसे, कहाँ हो गया हमारा. तो सबसे पहले तो पर्सनल ब्रांड हो, बिजनेस हो, स्टार्टअप हो, कुछ भी हो, यू आर एन एंटरप्रेन्योर. बिकॉज मैंने अभी भी क्या समझाया, ये टेक्नोलॉजी है, ये मैं हूँ, उधर ऑडियंस है. अगर ऑडियंस के दिमाग में जो कंडीशन है ना, अगर मैं वैसे के वैसी चीज प्रोवाइड करूँगी, आई एम नॉट एन एंटरप्रेन्योर इज सपोज टू क्रिएट समथिंग. यू आर नॉट सपोज टू जस्ट. अभी सिंपल चीज है. लेट मी जस्ट take this bottle, it's as it is. मैं इस बॉटल को ऐसे ही बेचूंगी. I'm a business person. Now let me just change the packaging of the bottle. Write this is alkaline, make it alkaline, make it good branding. I'm an entrepreneur. Make sense? Businessman buys it 10, sells it 30. Entrepreneur buys it 10, does branding, does marketing, uses brain, sells it 100. Difference? So now as a personal brand, if you are an entrepreneur, only then you can make it big. Very clear? You're supposed to create your own skill in a different identity. Now, to place your product, platform, right? Product हो, business हो, कुछ भी हो, आपको अपने प्रोडक्ट को प्लेस करना है. प्लेस 2 मार्केट में कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन. ऑफलाइन तो हम सबको पता है, लोगों से मिलो, बात करो, नेटवर्क करो, सबको बताओ कि व्हाट इज योर प्रोडक्ट, नॉट अबाउट, राइट. एंड ऑनलाइन हम क्या करेंगे, हमारे पास यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है और बहुत सारी चीज़ें हैं. अब आपको जो भी इंसान बोल रहा है पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए वेबसाइट बना लो, ये कर लो, पहले तो उसको समझाओ पर्सनल ब्रांड इज नॉट फॉलोअर्स, पर्सनल ब्रांड इज नॉट वेबसाइट, पर्सनल ब्रांड इज नॉट यूट्यूब. दीज आर प्लेटफॉर्म्स टू प्लेस माय पर्सनल ब्रांड. आई एम द पर्सनल ब्रांड. I am the personal brand. My product is my skill and my USP is how I sell my skill. True? So, now when you have a personal brand, you have yourself. When you have your product, done. You are an entrepreneur, you have a whole business module in front of you, you have a platform called social media. अभी हमने जब सेशन शुरू किया था, हमने अपनी ChatGPT से कुछ बातें की थी, ठीक है? अब उसमें ChatGPT ने 30 दिन का कंटेंट प्लान किया था. अब ChatGPT से घर जाने के बाद बहुत बातें करना. If you get time today, जो चैट है ना, उसी चैट को कंटिन्यू करके just talk to your ChatGPT. Tell your GPT about how you think, how you want to work, what you want to think. Your ChatGPT in next 40 minutes of your conversation will tell you where do you belong. प्लेटफॉर्म्स हमको बहुत क्लियरली पता है, प्लेटफॉर्म्स को यूज करना भी बहुत आसान है, पर मैं प्लेटफॉर्म यूज करना भी बता देती हूँ. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू एजुकेशन पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. हमने पर्सनल ब्रांड समझ लिया है. स्टार्टअप हम सबको पता है, आई डोंट रियली नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज अ स्टार्टअप, बट आई कैन एक्सप्लेन यू 3 थिंग्स अबाउट स्टार्टअप. 1, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ. दैट्स व्हेन यू डिसाइड प्रोडक्ट रिसर्च, मार्केट रिसर्च एंड व्हाट यू शुड बी डूइंग इन द मार्केट. डन. सेकंड, एज एन एंटरप्रेन्योर पहले 6 महीने सब खुद करो.
सब कुछ खुद करो, दुकान में झाड़ू लगाने से लेके शटर खोलने से लेके प्रोडक्ट बनाने से लेके प्रोडक्ट बेचने से लेके प्रोडक्ट डिलीवर करने तक. तो 6 months will give you 60 years of free money. Free money. Why I am telling you? When I did all of this in my business, I have done everything. Like from groundwork, from tracking the product to seeing the product is damaged, RTO आया product खोल के देखो, talk to the customer for hours, talk to client for hours. When I did all of that, is when I got to know how to tell somebody to do it. सिंपल है. अगर आज मैं खाना बनाने में प्रो हूँ, मैं फोन पे बता दूंगी बेटा इसको ऐसे बना ले, इसको ऐसे बना ले. ट्रू. बट इफ आई डोंट नो, मैंने खुद से नहीं किया है ना, तो मैं कितनी भी किताबें पढ़ लूँ मैं नहीं समझा पाऊंगी. सो फॉर 6 months do your business very hard, and 6 months later, number 2 point is know where to put who. Put the right people at the right places. As an entrepreneur, your job is not 6 महीने मैंने लर्निंग प्रोसेस के लिए बोले हैं. सीखने के लिए वो 6 महीने खुद मेहनत करो. बाकी पूरे बिजनेस को अगर ऑटोमेट करना है तो देयर आर 2 सॉल्यूशंस. नंबर 1, मेक अ सिस्टम. एक सिस्टम बनाओ, 6 दिन लगाओ, 15 दिन लगाओ, लेकिन आपका पूरा बिजनेस साइकिल वर्क कैसे करेगा ना, वो सिस्टम सबसे पहले बनाओ. पहले 6 दिन बिजनेस रोक दो. पर व्हेन यू लर्न, बहुत मेहनत कर ली ना हमने मेहनत करके सीख लिया है कि हाउ द बिजनेस इज सपोज टू फंक्शन. सो नाउ वी मेक अ सिस्टम दैट वर्क्स. उस सिस्टम में मेरी कितनी जरूरत है और कहाँ आई कैन पुट पीपल हु कैन कम इन बजट. सो योर जॉब इज नॉट टू डू एवरीथिंग इन द बिजनेस. योर जॉब इज टू पुट द राइट पीपल एट द राइट प्लेसेस. नाउ व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे अभी ऐसे कर रही होती, मैं वहाँ कहीं ट्राइपॉड लगा देती और शूट कर रही होती, तो पॉसिबल नहीं है. ही इज द राइट पर्सन, ही इज द बेस्ट एट इट. बिकॉज अब अगर मैं सिंपल वो वाला चीज होता है ना, मेरे को कहावत याद नहीं आ रही है, बट अगर मैं कोई चीज मेरा जॉब नहीं है तो वो मैं क्यों करूं? आई कैन बी प्रो एट इट. मैं उस जॉब में भले अभी वीडियोग्राफी आई ऑल्सो कैन डू, बट एट दिस मोमेंट माई जॉब इज टू स्पीक. सो माई जॉब इज टू होल्ड द बिजनेस, take the control, tell the right people at the right places how to do the job. Right? Now about technology, use these 3 things again. I'll sum up. Ma'am, कितना टाइम बचा है? 5:41. 5 minutes more? Yeah. So, number 1 is ChatGPT. Your ChatGPT can do 99% of things. The day you become at least 50% good at ChatGPT, आपको कुछ नहीं करना है. See, all of us talk to humans. Talk to ChatGPT as a human. Talk to ChatGPT like your friend, like your partner, like your employee. If you want to answer your client, you don't understand how, tell the ChatGPT. I do this a lot. I still do it. Whenever I go to a client meeting, before that, I tell ChatGPT, this is how my client is. And then I ask ChatGPT, talk to me like my client. Be brutal. Be brutally honest. Argue with me and brain rot me totally. So for 40 minutes, इतना दिमाग खराब कर देते ChatGPT कि उसमें क्लाइंट को चिल्ला रहे हैं, वाह सच अ गुड क्लाइंट. क्योंकि मैं तो अपना दिमाग बुद्धि खराब करके आ चुकी हूँ ChatGPT के साथ. तो अब मुझे क्लाइंट की बातों का बुरा लग ही नहीं रहा है, भले क्लाइंट कितना भी दिमाग खराब करे. माई पेशेंस लेवल like it goes to ends. So prepping yourself is very important for every single thing. Like even today when I came here, I was talking to ChatGPT, and then I do this vocal thing before a session. If anybody of you wants to become a public speaker, there is a extra, I don't know from where it's coming. Okay, so this is 2 advices. Before any session, don't read, don't make a script, do nothing. Consume data. Consume data. Talk to ChatGPT, ask ChatGPT questions, go to YouTube, consume data, consume a lot of data. Then for 15 minutes, continuously speak. Speak anything, speak bullshit. I was literally blabbering in front of when I was getting ready, I was like, okay, get ready with me, ye, wo. I was just doing that. That helps you speak continuously. Now, मैं शायद 1-2 बार, not flexing this, but 1 या 2 बार I would have buffered or like fall off my words. But when you speak continuously for 15 minutes and then you stay silent for 30 minutes, I did that. I spoke and I was like, Mummy, okay, I'll just finish up this whole story again. Mummy से बात याद आई. So, I'll complete this first actually. Then I spoke for 15 minutes. For next 30 minutes, I was like, I'm now shut. I just met my mom, dad, sat in the car, came here. And now I'm speaking here. I was not even speaking much more on the way. Because when you speak for 15 minutes continuously, and then you take a gap, and then you speak very fluently. Right? So before client meeting also I do this. Because your confidence will scream. It will scream. Even when I create videos. Okay. So now let me come back to the last story.
pretty much about now. If you want to learn in detail about how to use technology बहुत deep में, tomorrow also we have a session because today we had only 40 minutes. Okay, today personal brand startup and growth was the main topic. And now if you want to get entered into deep into technology, e-commerce, how to use marketplaces, we have a session tomorrow. Okay, so now the moment I started with this whole situation of technology, the one big problem that came to me was I didn't know coding. But guess how that worked for me? AI agents. AI agents. Now हमारे हिसाब से AI मतलब ChatGPT, Perplexity ये सब है, ऐसा नहीं है. This is just basic. This is ABCD of AI. There are custom AIs made for, like there is an AI called Emily AI. Now this AI does what? आप पूरी 30 मिनट की, 1 घंटे की, 2 घंटे की पूरी YouTube वीडियो की लिंक पर डालो, in seconds it summarizes what the whole video has to say. And when you watch the video, आपको पूरी वीडियो का डेटा ऑलरेडी वो 2 पैराग्राफ्स में मिल चुका होगा. 3-4 seconds. There are AIs जहाँ पे एक Gamma AI है, एक Gamma और Gamma AI, which Gamma. It makes PPT for kids and everything. Like even my like 5th standard में वो बच्चा है, that kid makes PPT there भाई. So you know there is specific AI for every single thing. So AI is not just ChatGPT. Now sit with ChatGPT. अभी पता है अगर आप ChatGPT को बोलो कि generate me a prompt to give to ChatGPT. Now this is the biggest decode that I ever did in my life. What I do is I go to ChatGPT. ChatGPT, I don't know what prompt to give to ChatGPT for getting content for next 30 days. So generate me a prompt. So now I take prompt from GPT and give it to GPT, and then I get a whole data. That's awesome. That's exactly how we decoded client problems. I'll tell you how. Sat with the client, asked clients problems, modulated clients problems, and then asked the client only what they need. Client told what they need. उनकी needs पकड़ के एक फॉर्मेट बना दिया, सिस्टम बना दिया, सिस्टम को अरेंज करके एक ऑपरेशन सिस्टम बना दिया, बना के क्लाइंट को दे दिया. ऑपरेशन सिस्टम बनाने वाली तो टीम है. माय जॉब वाज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड डिलीवर. दैट इज द जॉब ऑफ ChatGPT. So now you're not supposed to do everything by yourself. I don't even make decisions by myself. Today I took 2 blazers, click picture, ChatGPT, which one should I wear? Black one would look better, you would look this, that, full paragraph. Confidence at max. सवाल जवाब का टेंशन ही नहीं. Don't ask your partner like वो women रह रही है. I'll send my husband boyfriend. कौन सा पहनूं? And that person like कुछ भी पहन ले भाई. मुझसे मत पूछ. And that person like black पहन ले. मुझे blue पहनना था. जब blue पहनना था तो मुझसे क्यों पूछा? माँ के संस्कार. True. In simple words, just know जो काम करने के लिए दुनिया ने इतना समय लगाया है, which is building a chatbot, अब थोड़ा समय लगाओ और अपना काम उससे करवाओ. Don't do everything by yourself. Number 1, use technology at its max. सोशल मीडिया यूज करने के लिए ना 2 ही प्रॉब्लम्स आई थिंक लोगों में होते हैं. नंबर 1, कॉन्शियसनेस ऑफ लोग क्या सोचेंगे, एंड सेकेंड थिंग, ये करने के बाद नंबर्स नहीं आए तो. नंबर 1, नंबर्स डोंट मैटर बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ पर्सनल ब्रांड. वी स्टार्टेड विद दैट. Number 2, numbers will grow. You just need to make your personal brand bigger. And to make your personal brand bigger, there are only 2 things. Delete लोग क्या सोचेंगे because it's technology and me deciding what to deliver to people, and what people would think is I can decide. I can control what people think about me. True? Only I can control. Now in this मैंने पूरी एक खत्म हो गई. The time ended. Okay चलो. I'm just finishing it up here. अभी नहीं तो फिर मेरे को बहुत ही डांट पड़ जाएगी. ठीक है, ending it up here by telling you one little thing. Me as a person, I have been very average as a kid. Very average. तो सबसे पहले तो ये सोचना ही मत कि मैं कितना नहीं. मैं सच बता रही हूँ, in this room I would be the most basic person to literally talk about coding. But we run an IT and business development company today. Trust me, मुझे भी कभी विश्वास नहीं होता है. Reason being, most of the data that I learned today, 7 to 8 years before, I used to think भाई लोग कैसे कर लेते हैं. I used to fear thinking of being an engineer. I went to CA just because people told me you could do this because you're an average kid. I used to score 80-85% and I used to be very big on बाप रे ये कैसे हो गया.
7 years before when I came here, I lived alone in this city. I moved in with my mom dad last month to a new place. Now my mom dad, they live with me in this city with my brother. And I tell you, dreams don't have spaces in the rooms where you think what people would think. If I would think what people would think, I would be still living alone in this city. True? So, 3 things. 1, I decode very well. Number 1, don't fear what people say. Use technology as much as you can. क्योंकि technology use करना बहुत आसान है. हमको लगता है मुश्किल है, नहीं है. और सबसे बढ़िया बात बताऊं, मैं जज नहीं कर रही हूँ. I love हिंदी as a language. तो अगर आपको इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स हो रहा है बात करने में, मैं झूठ नहीं बोलूँगी. There was a time when I was very mid in English. It's not that I didn't know, but I was not confident speaking it. I used to talk to ChatGPT in Hindi. So ChatGPT हिंदी में इतनी सुंदर बात करती है ना, मेरी मम्मी ChatGPT से पूछती है, बेटा मैं कैप्शन कौन सा डालूं Instagram पोस्ट पे? My mother, I have taught her ChatGPT and she is utilizing it at max. I'm taking much more time on this. Just saying it, ChatGPT बहुत simple है, बाकी AI बहुत simple है यूज करना. नहीं समझ में आता है YouTube कर लो, नहीं समझ में आता है कल आ जाना. And third thing, most important thing, you're already a personal brand, you're already a business. Just 2 things are there. एक solid hard product होगा आपके पास, या तो आपकी skill आपका product होगी. So you always have something to sell, you always have something to build. And third and the last, actually fourth and the last thing, thank you for showing up. Please stand once, just stand everybody. हम सब खड़े होंगे and we'll do an activity now. Just one last activity. Everybody keep all the सामान in your hand. मैं भी mic रख दूँगी. सब रख देंगे सामान. भाई should come here. हम तो वीडियो बनाए, वीडियो क्यों नहीं बनाऊँ मैं? इधर से वीडियो बनाना अब आप. ठीक है, मैम. I would also want you to do that too. Okay. Done. Okay. बहुत quick करना है. ठीक है. Touch your elbow. Touch your chin. कितने लोग चीज को टच करें? We are conditioned to know. We are conditioned to know. जो दिखता है वो करो. That's where the communication gaps come. है ना? तो communication इस बात का रखो कि हम सुनते क्या हैं, हम समझते क्या हैं, ये नहीं हम देखते क्या हैं. क्योंकि इंटरनेट पे हम देख तो लेते हैं 10,000 चीज़ें, बट हम उसी पे यकीन कर लेते हैं. हम सुनने वाली बातों पे ध्यान ही नहीं देते. So when I said touch your chin, how many of you actually touched your chin? You heard. Whoever did not hear, try listening. Because when you listen to problems, why I'm telling this, my whole life only one thing worked for me when I heard what people want and I provided them. I guess मुझे नहीं पता आप लोग यहाँ किस उम्मीद से आए थे, but मैं इसी उम्मीद से आई थी देने के लिए कि anything that I provide, you need somewhere in your life. It has to be not very technical. It has to make a move in your life. Okay, so hear what people want, maybe a product, maybe a skill, and just give it to them. That's where your personal brand goes from here. Right? Raise your hand. Turn your hand. Give your main character a big bravo. Okay guys, signing off today.